Assalamu alaikum warahmatullah. Today is a new video lesson about shortcut keys. And in this lesson you will learn how to abort the action you have done in Excel. Suppose you have typed something in Excel cells and you do not want it to be there, or you by mistake type something on the already typed column or written field column. What will you do to cancel that? कि इसमें आप सीखेंगे कि आप काम कर रहे हैं एक्सेल में और सेल्स में, ऑलरेडी कुछ टाइप किया हुआ, उसके ऊपर आपने कुछ टाइप कर दिया, तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे, अबॉर्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे। उस यहाँ पर एलोवेरा जेल लिखा हुआ है और उसके ऊपर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ और गलती से टाइप कर देता हूँ, और मैं दोबारा इसको कैंसिल करना चाहता हूँ कि जो पहले लिखा हुआ था वो सही था, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा? तो मैं जो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दूँगा, तो अभी जो लिखा हुआ ये हट जाएगा और जो पहले जो लिखा हुआ था वो दोबारा आ जाएगा अपने सेल में। देखिए कैसे, दोबारा मैं करता हूँ इसको कि यू हैव टाइप समथिंग इन अ सेल and to type new word, or by mistake you type some other word in that cells. How to cancel or abort that? Simply press escape key from the keyboard to abort that actions. Easy and simple way to do or cancel or abort an actions in our cells. Thanks for watching.